Good morning, dear students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Today we are going to discuss chapter number 20, Social Problem of India and Challenges. Okay, student. In previous video we discussed about a minority of this chapter. This topic uh, we discussed the minorities in a previous video. In this video we will discuss about scheduled caste and scheduled tribes. Okay, first of all try to understand what is scheduled castes and scheduled tribes. The Indian constitution does not give a clear cut definition of scheduled caste and scheduled tribe. There is no clear definition in Indian constitution. This has been specially referred to by the order of the president on the advice of governor of the respective states. Okay, so generally what is it? It has been specially referred by whom? uh, by a president on the advice of governor, as we know. Okay, the main person of the nation is called president, but each states there is another system is there. Okay, like governor. So by advice of the governor, president referred this thing, okay, about scheduled caste. Actually, what was the reason when we were what say fighting for getting freedom at that time? Different kind of people, okay, some up from uh, Muslim minorities and some up from scheduled caste and scheduled tribe. The leader of them, they were also with the nation. So when the freedom was nearby at that time, there was insecurity among the people, those who are in a scheduled caste and scheduled tribe, and even the minorities. Okay, they are believing that some of upper caste, if they will form the government, and if there will be, the power will be in hand of what say upper caste, so they will have a injustice. That is why uh, when while framing the constitution, each and everything has been noted at that time also. Okay, so before independence there was planning by which way we have to form constitution. Okay, so beta make sure about it. Okay, now this has been specially referred by the order of the president on the advice of governor of the respective states. Then, in the Indian constitution, provision have been made to prevent caste-based exploitation, to wipe out the injustice to them through equality and fraternity, and to see that they progress socially, economically, politically, and educationally. According to Article 341, those castes included in this schedule are called scheduled caste. Okay, so actually there is no clear cut definition, but in short, suppose we have to understand. Suppose if you have a question, there in Indian constitution provision have been made to prevent caste based exploitation, to wipe out the injustice to them through equality and fraternity, and to see that they progress socially, economically, politically, and educationally. According to Article 341, those castes included in this schedule are called scheduled caste. Okay, so maybe you have such kind of question can be asked. You have to very clear about it. Make sure.
according to which article? 341. Okay, sometime it is asked in a blank also, and definition you have to be careful about it over here. Suppose you can put underline in your textbook also. Okay, something more about it. Those castes are in schedule, otherwise scheduled caste, they have special benefits. Okay, in education, there is a a liberal attitude for their age limit. Okay, even though their rank, and also okay, they have a there are different reservations for them. Okay, so according that they can also equally get chance. Now next, while those castes which are included in schedule of article 342 are called scheduled tribes. Make sure there are two articles: 341 for scheduled caste, okay, we are saying SC, and article 342, okay, those castes in article 342, they are called scheduled tribes. Okay, means Adivasi people, okay, those who are living in tribal area. People who live mostly in forest areas and mountains range are included among scheduled tribes. They live in specific geographical condition and live a different social and cultural life as compared to others. These people are economically and educationally backward. Okay, because they didn't get chance, okay, to merge with each other. Okay, uh, because scheduled tribes, people of scheduled tribes, they are living in mountain range. Okay, and the life of mountain is really full of with hardship. Okay, so they didn't get any opportunity for developing, they didn't get education. They still, they have a different their culture, even though they have many superstitions in their life. Okay, so that is why they got a special reservation in our constitution. Okay, so they can have also equal development. Okay, make sure 341 is for scheduled caste, and 342 article is for scheduled tribe. Okay, I am keeping underline over here 342. And people who live mostly in the forest, mount, mountainous range are included among scheduled tribes. Dear student, you also put underline in your textbook, so when you read, okay, you can remember what we have discussed also. Now, after understanding about who are called scheduled caste and who are called scheduled tribes, we supposed to understand what is provision. Provision मतलब व्यवस्था है. Okay, what is provision has been done in our constitution. Constitutional provisions for the development and welfare of scheduled caste and scheduled tribes, the following special provisions are made in the constitution. These are as follows. Okay, there are certain provisions, okay, व्यवस्थाएं की गई है. We are going to discuss one by one. First of all, which one? A. General provisions. According to Article 15 of the Constitution, Article 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. In addition to this, no condition can be imposed for entering shop, public restaurant, hotels, and places of public entertainment, or for using wells, lake,
bathing place, roads for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. Okay, so whatever public property is there, okay, each and everyone of Indian citizen, okay, they can go, okay, without having any restriction. हमें आपको, चलो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात से पहले थोड़ी एक अपर लेवल की बात बता देता हूँ कि हमारे वहाँ डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का था। ओके, आपको याद ही होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक शॉर्ट बात कर देता हूँ कि जैसे गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे और वो फर्स्ट क्लास में बैठे, तो उनको एक इंडियन समझ के ब्रिटिशर्स ने पीछे जाने को बोला था और उन्हें मना किया था ट्रेन में, ओके, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने को मना किया था। तब उन्होंने वहाँ उनको मतलब कि उतार दिया था। ये पोजीशन थी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को पहले टेंपल में, मंदिर में जो रेगुलर पानी जो वेल में से, पहले तो क्या था अपने जैसा मतलब सिस्टम्स नहीं थी, पानी वेल में से, कुएं में से लाना पड़ता था, तो वो भी अलाउड नहीं था, उनके लिए अलग जगह रखी गई थी। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश में थे। ओके, और ये प्रॉब्लम्स आगे जाके ना बनने रहे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए कि दोज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भाई तुझे ये जगह पे मंदिर में नहीं जाना है, तू ये कास्ट का है तो तू मंदिर में नहीं जा सकता है, तो हमारे साथ बैठ नहीं सकता। ये सारी चीज़ों को नाबूद कर दिया। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नाबूद करना मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो लीगली रॉन्ग है और वो प्रूव होता है तो उसको पनिशेबल एक्ट के थ्रू उनको सज़ा भी होती है। बराबर, ये खाली सिर्फ बताने की बात नहीं, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें की गई है मतलब कि उसको फॉलो करना ही पड़ता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके, व्हाट इज आर्टिकल 15। सो देर इज नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड फॉर एंटरिंग शॉप, ओके, public restaurant, hotels and places of public entertainment or other, and B is for using wells, lake, bathing places, roads for using place dedicated for public use completely or partially under control of state government। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो नो वन कैन डू दिस थिंग। अगर आप क्या कोई खुद का गार्डन है तो आप आपके अलावा किसी को नहीं जाने देते, दिस अप टू यू। बट सपोज दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी, सो नो वन कैन डिनाई यू टू गो देयर, अदरवाइज यू कैन नॉट डिनाई दैट समवन कैन नॉट कम इन दिस पब्लिक प्रॉपर्टी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट बेटा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29A, if a person living in any part of India holds his own language, script or culture set up of his own, he has right to preserve them. And B, a person will not be refused admission on basis of religion, caste, language to any institution run and mentioned by with financial help from the government. So if a people living in any part of India holds his own language, script, culture set up his own, he has right to preserve them. Okay, आपके आसपास जो भी लैंग्वेज का इंसान रहता है, ओके, सपोज केरलियन रहता है, कोई मद्रासी सपोज रहता है, तो उसकी खुद की लैंग्वेज में वो बात कर सकता है। बराबर, मतलब कि वो लैंग्वेज के लिए प्रमोट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सो नो वन कैन, ओके, मेक एनी डिस्ट्रिक्शन। सेकंड थिंग, अ पर्सन विल नॉट रिफ्यूज एडमिशन। सपोज आप गुजरात में है तो गुजरात में बहुत सारे स्कूल्स है, गुजराती स्कूल्स है, तो बाहर से कोई भी आया तो वो स्कूल उनको मना नहीं कर सकती कि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट, ओके, एंड यू डू नॉट गेट एडमिशन ओवर ईयर, ओके, बिकॉज इन गवर्नमेंट स्कूल्स विद द help of financial help of the government, okay।
सो मेक श्योर आपको आर्टिकल सारे याद रखने बेटा। 29 ओके। ए है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट में, और बी वो रिगार्डिंग एडमिशन इन द स्कूल एंड ऑल। सो दीज आर व्हाट जनरल प्रोविजन ओके। नाउ बी सोशल प्रोविजन, सामाजिक। According to Article 46 of the directive principle of the state policy, a state would take care of the educational, social, and economic interest of backward class of the state, especially scheduled caste and scheduled tribe, will be protected against social injustice and exploitation. Okay, this is what. Suppose state government has to take care of the people, those who are in scheduled caste and scheduled tribe. They are must not be exploited by anyone. Okay, स्कूल में कोई टीचर्स भी उनको जाति के लिए एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लॉइट मतलब कि उनका जो मतलब कि शोषण होता है वो ओके। कोई जाति के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरे सराउंडिंग भी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं बेटा? स्टेट की। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड ओके, इफ देयर इज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेट, सो ऑल इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू टेक केयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसीलिए तो आप जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं तो उनको सालाना बुक्स मिलती है, उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म मिलता है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। सो फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम दी आवर से गवर्नमेंट एंड एज पर और से आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4), if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, the state government will have right to provide reservation in jobs and appointment. Okay, as we know, okay, in every office there are different seats, okay, for reservation. Okay, मतलब अकॉर्डिंग देयर इज अ व्हाट से वी नीड वन वीडियो फॉर इट अबाउट दैट ऑल, बट आई एम टेलिंग यू देयर आर सर्टेन सीट्स आर रिजर्व्ड। ओके, जैसे कि भाई अकॉर्डिंग परसेंटेज है 7% या 10% सीट्स में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का ही इंसान होना चाहिए, बाकी किसी को वो अलाउड करते नहीं हैं। ओके, सपोज 95 आपके है पर वो सीट अगर रिजर्व्ड है तो 95% वाला वहाँ जाएगा नहीं। जो शेड्यूल ट्राइब की सीट है तो शेड्यूल ट्राइब में 60% वाला है तो उसको लेना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए रखा है। उसका रीज़न क्या है कि ये धीरे धीरे जो शेड्यूल ट्राइब में से लोग आ रहे हैं या शेड्यूल कास्ट में से जो लोग आ रहे हैं उनको भी समान तक मिलती रहे, और धीरे धीरे एक सपोज फैमिली बराबर हो जाए तो उसके साथ दूसरे मतलब कि वो देख के दूसरे बच्चे पढ़े और सोसाइटी मतलब कि एक मिंगल हो जाए। सो दिस इज द रीज़न। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 and 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. There is no reservation of seats in Rajya Sabha. Make sure, sometime it is asked. There is no reservation in where? In Rajya Sabha. Okay, I am making underline over here. There is no reservation. Okay, and where is this reservation? In legislative assembly and parliaments. Okay, एकदम शॉर्ट पार्लियामेंट को छोड़ के बात बता देता हूँ। अगर आप गांव में रहते हो या सिटी में भी, तो गांव की बात बता दूँ तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है तो कभी कभी बोला जाता है कि भाई ये तो इस बार लेडीज़ की सीट है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इस बार
SC या शेड्यूल कास्ट की सीट है या ST की सीट है, उम्मीदवार उनमें से होना ज़रूरी है। हाँ, ना मिले तो कोई दूसरा हो जाता है, पर जो सीट जिसके हिसाब से आती है तो कोई दूसरा वहाँ मतलब कि नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता। इतने स्ट्रिक्ट लॉज हमारे लिए बनाए हुए हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एज आई टोल्ड. Now student, this last para we are going to discuss. Other than this, under different 5 years program, hotels have been opened and hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive examination have been started. Residential schools, ashram shala, have been set up for educational progress. Minimum requirement of age, fees and qualification have been relaxed for candidates of this group for government jobs. बहुत सारी आप देखना, अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है तो उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल और से कास्ट उनको फॉर्म नॉमिनेशन के जो फीस भरनी होती है वो भी नहीं भरनी होती है, तो बहुत सारे मतलब कि उनको वहाँ फ़ायदे मिले हैं. देन Dr. Baba Sahib Ambedkar organization facilitates those people who work for social understanding and upliftment of weaker section of population, their social transformation, potentiality, justice, and human dignity. Okay, there is organization Dr. Baba Sahib Ambedkar. There is a separate division in state and special officer is appointed at the central level for welfare and protection of interest of the people. Okay, and there is special officer, okay, at central level and even state level. They are also observing this thing and they are trying to uplift the weaker section of the society. A national commission is formed at the central level for these people, along with various schemes have been started for social, educational, economical development of these people by state and central government. There are different schemes also have been started to uplift the weaker section of the society. Okay, by this way we are putting end of this video. I hope you are understanding all these things. Thank you. Have a nice day.